my name is Deekshita and welcome to my channel. If you are seeing this face for the very first time, then please make sure that you subscribe. So in the morning only I asked you guys if you want to see any makeup challenge and so many of you said yes, so I thought I should do this video. मैं बहुत टाइम से करने का सोच रही थी but मुझे लगा पता नहीं आप लोग interested हो गए या नहीं हो गए. So yes, this was my take on doing my makeup without any mirror or any reflective surface. So I hope you'll enjoy this video and without wasting more of your time, let's just get started. Okay, so I'm flipping the screen back and I have nothing now. ये मेरा setup है सामने. This is my makeup and I won't be using any mirrors. So let's go. I hope I am in focus and let's start with my makeup. मैंने जितने भी products यहाँ पे लिए हुए हैं, as you can see, none of them has any sort of mirror in it. ये आई शेडो पैलेट किसी भी चीज़ में मिरर नहीं है एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं फोकस पे हूँ, वीडियो का बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, बट ठीक है, लेट्स विंग इट. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ प्राइमर. ऑब्वियसली आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एक नया प्राइमर. आई बीन ट्राइंग इट आउट, सो लेट्स डू दिस. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड यू नो आई एम सुपर नर्वस अबाउट दिस वीडियो एक्चुअली बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग की लाइटिंग कैसी चल रही है, सेटअप कैसा लग रहा है. सो I hope it turns out great. Now let's start with the foundation. I'm gonna use Wet n Wild का Photo Focus foundation and I am in the shade Nude Ivory. Let me put my sweater up and we'll start. I'm gonna use a makeup sponge to blend it because मुझे लगता है कि sponge it would be maybe easier, not sure. I hope I won't regret my decision, but let's do it. I don't know, मुझे पता ही नहीं. This is the first time I'm doing my makeup without using any sort of mirror या फिर कैमरा. मतलब कहीं पे भी नहीं दिख सकता, तो मुझे बहुत ज़्यादा shit. I'm like कैसे होगा, I don't know. My trick is that I am going to blend everything like for a long time because मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स कम लग जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वेल ब्लेंडेड रहे, ऐसे यू नो स्पॉट्स या पैचेस ना रहे उसके. एंड कंसीलर भी मैं सेम ट्रिक करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू पोक माई आई विद दिस वॉन्ड. सो आई हैव टेकन सम कंसीलर हेयर. I'll take it अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे and I'll apply it on my under eye. Now before moving on to the next step, I'll take a sip of my orange juice because I'm really thirsty. Well, let's move on. Next care. Okay, next is bronzer. I'm using this Sugar का bronzer. This is in the shade Woody Wonder. It's the Contour de Force. And I'll take this flat top brush. I use this for my bronzing and contouring. Now you normally apply bronzer somewhere around here. I'm just winging it and eyeballing everything. Not even eyeballing, I can't see. Just mind-balling everything. क्या लगा है क्या? I don't know. Is it applied properly? Is it blending? कुछ product आया भी है? Okay, now let's move on to blush. तो blush में इसका थोड़ा सा ही लूँगी because I know it's very pigmented. And I'll apply it here, like towards the outer part of my face. Highlighter के लिए मैं ऐसा brush use करती हूँ and I use this Wet n Wild का highlighter in the shade Precious Petals. ये काफी अच्छा rose gold type का shade है. And I think it really complements my skin tone. And this might not be that difficult. I'm thinking maybe थोड़ा सा on my nose as well. Okay, let's move on to the most dreaded part, which are my eyes, obviously. So eyebrows fill करने, eye makeup करना है, mascara लगाना है, shit. So let's start with the brows.
I recently got this product from NYX. It's their tinted brow mascara and I'm so happy that I bought it because अभी अगर eyebrow pencil से fill करना था तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती. But I am trying to I'll try to attempt doing my brows with this tinted brow mascara. So let's try this. I just want to just make sure कि eyebrows है कहाँ ताकि मैं skin में ना कर दूँ. यार eyebrows वैसे can I do my eyebrows without mirror because I don't know, eyebrows I don't think हो पाएंगी. Like, will I be able to do them? Is it possible to do them without a mirror? चलो, I'll try. I won't cheat and do my eyebrows with the mirror. मैं ऐसे ही करूँगी, ठीक है? Like a tattoo on my heart, hanging like a broken work of art. Used to be lifetime until you fucked time. Now I'm just a rose inside the dark, trying to figure out what's in my head. Like trying to put a needle through something red after the flames still. Okay, leave it now. ऐसे तो वैसे मुझे पता चलेगा नहीं. So let's move on to the. So I'll first use this lighter shade for all over my lid. Now moving on to the next shade, I'll be using this thoda sa dark brown shade, like very lightly I'll take it and I'll deepen my crease with this a little bit. So let's do this. Or should I do this with my blush wala shade? वैसे इससे भी अच्छा लगेगा crease deep करना. Okay, I'll try this. Like chuck it, वो वाला रहने दो. I'll use this shade from the my blush. और इसको यूज करती हूँ थोड़ा सा मिक्स विद अ लिटिल बिट ऑफ दिस. लेट्स सी क्या होता है. वैसे भी वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग हियर. आई एम जस्ट टेकिंग आईडिया की क्रीज कहाँ पर है. Right now I'm craving for a mirror like anything. Like I never thought in my life कि मैं mirror को इतना miss करूँगी जितना मैं आज मिस. So now let's start with this वाला eye because वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या ही इसको करूँ मैं. So again I'll take a little bit of the blush, थोड़ा सा dark brown shade, like just a little dab of it. How is my eye makeup looking, guys? Please tell me in the comments. And now finally the final step. I'm going to take this liquid eyeshadow that I got from Sis Beauty because ये थोड़ा सा glam party वाला look मैं कर रही हूँ. And since मैंने ये pink वाला shade use किया है तो I think ये दोनों colors काफी अच्छे भी लगेंगे साथ में. And I'll just take a little bit like normally I apply it directly आँख में and then अपने lid में and then I spread it. But आज I won't take that risk because again I don't want to poke myself in the eye. We need to take precautions here. So I've taken it here. मैं थोड़ा सा अपने finger पे लूँगी and I'll apply it यहाँ पे lid पे अपने. Oh God. I'm next to get hold of yourself. Do it. Where do we go from here? How do we wash away the last? Oh, ये सूख भी गया जो निकला हुआ था. Should have to do it fast now. Oh no. Oh shit यहाँ पे लग गया. मुझे सब फील हुआ कि यहाँ पे कहीं पे लग गया. छोड़ो. Okay, I hope जितना मेरे finger में लगाया उतना मेरे lid पे भी लगाओ. And phone, don't disturb. Now let's move on. You must be wondering, will Dikshita do an eyeliner with this look? Well, my girls, let me tell you, no I won't. I am already very bad at eyeliner and अभी तो without makeup तक मैंने try किया तो या तो मेरी आँख के अंदर eyeliner घुसेगा या फिर कुछ ना कुछ tragedy होगी मेरे साथ. So I won't be applying an eyeliner. I'll skip that step. And अच्छा मुझे अपनी lower lid पर काजल लगाना है लेकिन I'll do that. But again, I need to concentrate for this like anything. So deep breaths, girls. Let's see. यार ये बहुत डिफिकल्ट है. मुझे लगा नहीं था इतना डिफिकल्ट होगा बट मुझे फीलिंग हो रहा है कि वाटर लाइन का है. Tattoo on my heart, hanging like a broken
Guys, don't try this at home. Okay, I need to tell you, don't try applying liner or kajal or something like that without mirror at home, unless you are a professional at it. Okay, I'll apply very little bit. मेरे को बहुत डर लग रहा है इसको लगाने में. Okay, छोड़ो, ज़्यादा नहीं करेंगे. I'll take a brush. इसमें मैं थोड़ा सा अगेन ये ब्राउन शेडो लूंगी and I'll blend the under eye. I just ruined my blush. मैंने इसके ऊपर अपने पूरे से नाखून लगा दिया. I did not know कि यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे हाथ रखा और पूरा मेरा नाखून लग गया. Can you see? मतलब not ruined मतलब ठीक है, बट थोड़ा सा मैंने वो कर दिया. Damn. Now let's move on to mascara. Again, I want to injure myself badly today. तो मैं सारे products use करूँगी. But I'm mascara के बगैर तो I think ये बहुत ही बेकार लग रहा होगा. तो let's do mascara. It feels weird, you know, doing makeup without mirror. मतलब बहुत ऐसा incomplete सा लग रहा है, बहुत weird सा लग रहा है. Okay, now let's move on to the fine. I can feel कि mascara पूरा clump हो रखा है. Like वो होता नहीं जब आपका mascara clumpy सा हो जाता है तो आपको यहाँ पे weird सा feel होता है, बहुत heavy सा, और यहाँ पे कुछ अजीब सा मुझे ऐसा feel हो रहा है बहुत ज़्यादा. But ठीक है. Let's move on to the final step, which is lipstick, another very dreaded step. So again, I'm going to apply it just थोड़ा सा inner area में, and then I'll spread it with my finger because wand से I don't think ढंग से लग पाएगा मुझसे. And कुछ step बचा तो नहीं और नहीं. I think this is the last step. So and I think our makeup is done. सब कुछ कर लिया है. Final step, I'll do the spray one more time. First of all, before seeing it, you guys go to the comment section and tell me how did I do it. कैसा लग रहा है मेकअप? Please give me your honest opinion and feedback. अगर ये बहुत गंदा लग रहा है then मुझे बताओ, कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी. But I'm pretty sure I did not do a good job. And now it's the moment of truth. It's the time for me to see the makeup. So I have the mirror here and oh god, again I'm nervous. Okay, let's see the makeup shit. Okay, I'm opening the mirror and I'll look at myself now. I did a decent job. I think I did a good job. यहाँ पे तो बहुत ही गंदे से कुछ ब्लेंड नहीं हो रखा है, बट मुझे लग रहा है ना कि आई मेकअप अच्छा हुआ है. मतलब since I did it without mirror, I think the eye makeup turned out good. I think ये ग्लिटर का भी कमाल है because ग्लिटर ने उसको थोड़ा सा एम्प अप सा कर दिया ना, तो वो शायद उससे अच्छा लग रहा है. एंड सी आई सेड मुझे लग रहा था यहाँ पे पूरा फैल गया है, एंड ये पूरा फैल गया है सच में. शुड आई डू लाइक अ बी रोल जैसे सारे ब्यूटी गुरुज करते हैं? I think I did a decent job, like considering कि यहाँ पे कोई भी मिरर या कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं था एंड मैं कुछ भी नहीं देख पाई थी. कुछ weird सा फील हो रहा, ठीक है, एंड मैं कुछ भी नहीं देख पाई थी. I think the makeup turned out good and मैं इसको थोड़ा सा सही करूँगी and then I'll film the next video. Like I won't remove the makeup. And अगर आपको कोई और challenge video देखनी है then please tell me in the comment section. Do you want to see food challenges? Like मुझे ना बहुत amazing सा food challenges देखे मैंने YouTube में, but I don't know if my audience is interested in watching that or not. So if you want to see food challenges तो मुझे आप comment section में ज़रूर बताना and I'll try to do something like that. And if you haven't already subscribed then click on this red button to subscribe to the channel and please bell sign में भी click कर देना. That's very important because without that you won't get notified when I'll upload a new video. And this is my Instagram handle. You can follow me there if you want to. And now I'll see you next time. And thank you for jailing me for so long. Bye.